Okay, so as we were talking about periodic table in the last few classes, and we started with group 1 and we talked about group number 1 in the last class, and now we are moving towards the next group, which is group number 7. That is a part of our syllabus that we need to discuss. Group 7 after group number 1. There is no inclusion of group 2 in our syllabus, so we need to replace group 2 by group 7. तो हमें ग्रुप 1 गो 1 के बाद 7 पढ़ना है, 2 और 3 4 5 नहीं पढ़ने, ठीक है. So let's start. If we talk about बच्चों group number 7, so we have a lot of elements over there, and one of them is fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, and then astatine. These are the elements, or you can say that these are the members of group number 7, that is known as halogens. ये आपके पास ग्रुप है जिसका नाम है हेलोजन, और ये सारे उसके क्या हैं, पार्ट हैं. Halo means what? Halo means salt, and gens means producer. So you can consider these elements that they are salt producers. So in every salt you will find these elements. For suppose if you just talk about your table salt that we are using in our houses, it is NaCl. So you find a Cl in that salt as well. You can say that these are actually salt producers. Is that right, Bacho? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, so let's start this then. We have some physical properties of these substances. We need to start with physical properties of these substances. You need to keep remember, but all the time, you need to keep remember that they are always diatomic in nature. They are always diatomic in nature. Diatomics means they are always F2, Cl2, Br2, I2, Ag2. They always exist as diatomic molecule. सर Right, ये इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं ये होगी ये वाली. केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी. हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. They exist as diatomic molecule, right? Or you can say that what is diatomic? Diatomic means two atoms together. You can say that two atoms together. You need to keep remember this. There are two atoms together. They can ask the definition about diatomic for 1 mark. In many of the questions of IGCSE, they ask for this. So you need to keep remember what is diatomic. Diatomic means there are two atoms together, right? So you can see this in the diagram that all the time they are always together. Like for suppose if you talk about fluorine or any group 7 member, they always have 7 electrons in the outermost shell. You can see this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last shell of any halogen always have 7 electrons in the outermost shell. So they want 1 more electron to complete their octet. So what they do, they just share 1 electron by the other halogen. So whatever the halogen you have, whatever the halogen, for suppose it is fluorine, chlorine, bromine, iodine, whatever, all the time they are like this. So last share unka hamesha aisa hi hoga. So you can see this, every halogen share 1 electron with the second halogen to form diatomic molecule. Is that right, every one of you? Yes, sir. And you also know this, that this is a covalent bond, so it is a simple molecular structure. This is simple molecular structure. This is, bacho, what? This is simple molecular structure, and in covalent compounds, we have weak force of attractions, right? And we can say that they have weak intermolecular forces. They have weak intermolecular forces between the molecules. Intermolecular forces between the molecules. So that is why, due to this condition, you can say that they have low melting point and boiling points. Right, bacho? Yes. So you can say that the structure is simple molecule. They can ask an exam, why chlorine or why bromine or why iodine or why any covalent compound have low melting point. So you can say that because it is a simple molecular structure with weak intermolecular forces between the molecules. That is why they are having low melting point and boiling point. Right, bacho? Yes, sir. And this is very much important. You need to keep remember this. देखो बच्चों, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप लिखोगे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आप लिखोगे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये 2 लफ्ज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बोल दिया हाँ ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, हम ये लिख लेंगे, लेकिन जब आएगा ना पेपर में सवाल आपके पास,
तो आप पता है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज अ सॉलिड, इट इज फला, इट इज ढिमाका, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इस तरह आप लिखकर जो है ना पूरा आंसर आप खराब कर देंगे। तो भाई आप इस बात को जरा मेंशन कर लो, इसके आगे जो है एक काम करें, आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लें, नोट डाउन कर लें कि जब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको एक बार लाजमी देखे जाना। डेफिनेटली आप लोग भूल जाते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको ये इंपॉर्टेंट लगा, आपने लिख लिया अपने पास, लेकिन जब आप फाइनल पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अपने स्कूल के मॉक्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप इसको फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ देंगे, आप इसको नहीं देखेंगे। तो काइंडली इसके आगे पीछे कहीं इस तरह लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसको लाजमी देख के जाए। जो चीजें बिल्कुल बेसिक होती है ना, हम उसको फाइनल टेस्ट के दौरान छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं यार मुश्किल चीज याद कर लेते हैं, ये तो हमें आता है, और जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वही हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है फाइनल एग्जाम में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने स्कूल के बच्चों को टेस्ट दिया था, तो जो बच्चे मेरे साथ थे जिन्होंने अपना मेंटल और अपना फिजिकल अपीयरेंस मेरे साथ रखा, उनको जब मैंने एम्फसाइज किया इस बात पे, तो उन्होंने उसको लिखा और उन्होंने उसको याद किया। अभी मैंने 20 पेपर्स चेक किए हैं, लेकिन उन 20 पेपर्स में से हर एक के 4 मार्क्स नहीं आए इस क्वेश्चन में। 20 स्टूडेंट्स में से 14 ने सही किया, 13 ने सही किया, बट 6 और 7 ने गलत किया। उसकी वजह क्या है, उनकी कंसंट्रेशन नहीं थी क्लास में जब मैं उनको कह रहा था, ठीक है ना। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, इवन ए लेवल्स में इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रक्चर, this is structure and this is bonding. So बच्चों you need to keep remember that in terms of structure and bonding अगर आप define करोगे तो molecules लिखना जरूरी है covalent compounds के साथ, और bonding में आपने लिखना होगा weak intermolecular forces। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे। Got it every one of you? Yes. Yes, sir. Okay, so Yes, every covalent compound, even it is chlorine, bromine, iodine, oxygen, hydrogen, or even it is ethene or ethane, whatever the covalent compound you have, they are always, except giant covalent structure, they are always have weak intermolecular forces as a bond, and they have simple molecular structure. So you need to keep remember the structure and bonding to get 2 marks in the exam. Okay, then they have low densities. This is one more the physical property of halogens. They have low densities, and you can say that about density. And if you talk about the electrical conductivity, so you can say that they are bad conductors of electricity. They are bad conductors of electricity. And if I ask the reason for this, why they are bad conductor of electricity, so you need to keep remember this, that I always emphasize that elements are always conduct electricity due to the presence of electrons. So I just use the rule, Arabic rule for this, and which is an E for an E. You need to keep remember an E for an E, right? What does it means? You need to keep remember this, that this is saying that elements, E for element, elements always conduct electricity through electrons. Elements always conduct electricity through electrons. So right now we are talking about elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine, they all are elements. They are not compounds, they are elements. So if they are bad conductor of electricity, so you need to say them, they do not have delocalized electrons. They do not have delocalized electrons. Right, bacho? yes, sir. So you need to Yes, keep sir. this, that Yes, they don't sir. have delocalized electrons. That is why they cannot conduct electricity. This is also for 1 mark. Examiner can ask for 1 mark that why chlorine cannot conduct electricity. So you can say that chlorine do not have delocalized electron. Chlorine molecules do not have delocalized electrons, so they cannot conduct electricity. They can even ask why phosphorus cannot conduct electricity. You can say that phosphorus is one of the molecule which do not have delocalized electrons. That is why it cannot conduct electricity. अब सवाल पेपर में पूछते हैं why phosphorus cannot conduct electricity, बच्चे जवाब देते हैं because phosphorus is a non-metal. This is not the right answer. You need to keep remember कि भाई अगर electricity conduct होगी या तो वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी या तो वो आइंस के थ्रू होगी, ठीक है ना। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट एन ई फॉर एन ई एंड देन फॉर आई फॉर एन आई, राइट। आई फॉर एन आई मींस, आई फॉर एन आई मींस क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इफ यू टॉक अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स, इफ यू टॉक अबाउट ionic compounds, so they conduct electricity through
ions. They conduct electricity through ions. So whenever they talk about ionic compounds, they always conduct electricity due to the mobile free ions. And if they talk about elements like metals and graphite, or any element which can conduct electricity, so you can say that it is always due to the presence of electron. Is that clear, every one of you? And you need to also Yes, sir. that whenever ionic compounds are aqueous and they are molten form, then they can conduct electricity. In solid, they cannot, right? Yes, sir. So these are the basic physical properties that you need to keep remember about halogens. But I told many more other things जो कि इससे related नहीं थी, but मैंने आपको बता दी. ठीक है. So let's carry on towards trends. Let's talk about trends. We have a lot of trends over here that we need to discuss. Trends, something which is going to be followed over here. Just look at over there, bacho. Fluorine is gaseous. Chlorine is gaseous. Bromine is liquid at room temperature and pressure. Iodine is solid. Astatine is solid. This is a very minor thing over here that I mentioned, but it is very important for MCQs, right? Keep remember this. Bromine is the only liquid non-metal at room temperature and pressure. Bromine is the only liquid non-metal at room temperature and pressure. And iodine is also one of the, you can say that out of 4 non-metals, one of the solid non-metal. We have sulfur, carbon, phosphorus, and iodine. These are 4 solid non-metals at room temperature and pressure. Astatine is a radioactive, or you can say that it is rare in natural atmosphere. So that is why we are not considering this as a solid, but maximum 4 non-metals can exist naturally in the atmosphere as a solid. That are carbon, sulfur, phosphorus, and iodine, right? So you can say that the first trend is state changes. State changes from gas to liquid and liquid to solid. And we know that when the solid appears, so the melting point should be greater of solid and the boiling point should be greater of solid rather than gas and liquid. So you can say that melting point increases down the group. जब solid की तरफ जा रहा है, so it will be melting point increases down the group. You can say that boiling point increases down the group. You can say that density increases down the group. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. One more thing that you need to keep remember is volatility. What is volatility? Volatility is one of the, you can say that specialty of substance by which they can evaporate. They can evaporate. For suppose अगर आपके पास कोई gas है तो they can evaporate at room temperature and pressure. But अगर कोई solid है तो they cannot evaporate at room temperature and pressure. इसका मतलब जो gases वो हैं वो उड़ सकती हैं, जो solid हैं वो उड़ नहीं सकते हैं room temperature and pressure पर. तो इसका मतलब ये है कि आप डाउन द ग्रुप जब जा रहे हो तो सॉलिड अपियर हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो यू कैन से दैट वॉलेटिलिटी decreases down the group. राइट बच्चों? सर ये वॉलेटिलिटी का क्या मतलब था? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बेटे जब कोई चीज मतलब आप रखें और वो उड़ जाए. जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल अगर आप रखा छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा. जैसे थिनर होता है, आप उसको रखा छोड़ेंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा रूम टेम्परेचर प्रेशर पे. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए आराम से, या गैस जो है खुद उड़ जाए, बड़े आराम से डिफ्यूज हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल. ठीक है ना? नाउ द कलर आल्सो. सर ये ब्रोमीन जो है ये वॉलेटाइल लिक्विड है फिर? Yes, absolutely right. Now fluorine is yellowish gas, बच्चों. It is yellowish gas, right? And if you talk about chlorine, so it is yellowish green gas. It is yellowish green gas. If you talk about bromine, so bromine is actually reddish brown liquid. This is reddish brown liquid. In the liquid state, it is reddish brown. And if you talk about gaseous state, so it will be brown gas, right? You need to keep remember the difference. And if you talk about iodine, so iodine will be purplish black solid. This is purplish black solid. And if you talk about this gaseous condition, so in gaseous condition, it is also brown. And if you talk about the astatine, so it should be dark black solid, right बच्चों? So you can see this. What happened to the color down the group? Down the group जाते वक्त color के साथ क्या हो रहा है बच्चों?
It gets darker. Gets darker. Yes, so also very much important trend that you need to keep remember, color become darker down the group. Color become darker down the group, and the last that should be the trend over here is reactivity. Reactivity over here decreases. Reactivity Decrease. down the group. In group number 1, you talk about the reactivity increases down the group, but over here you need to keep remember when you move down the group, so reactivity decreases. So if you talk about fluorine, so this is the most high, like mostly reactive non-metal over here. This is the most reactive non-metal, right? This is the most reactive non-metal of this group, or you can see that the periodic table, and this is the least reactive non-metal of this group, right, bacho? Is that clear? Yes, sir. Yes. Any problem to any one of you? All clear? Yes, sir. Yes, बच्चों, अगर कोई सवाल है किसी का भी तो बगैर शर्माए आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं अनम्यूट नहीं कर सकता अपने आप को, तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बच्चों? Okay, ऑल sir. क्लियर एवरीवन ऑफ Yes, यू? sir. All clear, sir. चलें तो आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है, एंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ही है, तो पेपर में काफी मर्तबा वो पूछ सकते हैं, और इसको पूछने का अंदाज ही डिफरेंट होता है। वो ऐसी जगह पर इसको पूछेंगे आप सोच भी नहीं सकते होगे कि यार ये हमसे यहाँ पूछ सकता है ये बात को ना, तो काफी मर्तबा बच्चे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं इसकी वजह से। बट यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपको इसका जवाब आना चाहिए, आपको ये जवाब आना चाहिए, आपको क्लिक करनी चाहिए ये बात देखते ही कि यार ये मुझसे उसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास है उसका नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Right, for this you need to keep remember one thing, that for suppose if you have halogens, if I call this यार आपके पास halogen है तो इसका मतलब क्या है? We are talking about the molecules of group 7. So you can see this that they all are molecules of group 7. You can call this this is what? This is fluorine you have. This is fluorine gas. This is chlorine gas. This is bromine gas. This is iodine gas, right? But if I talk about halide ions का मतलब क्या होता है? That when these group members receive electrons and form ion, so we all know that they all are group 7 members, so they require 1 electron. So whenever they form ionic compounds or salts, they always receive 1 electron to become -1 charge. So they are always -1 in ionic compounds, right? So for suppose if you talk about fluorine, so it receive 1 electron, it becomes fluoride. Chlorine receive 1 electron to become chloride, bromine receive 1 electron to become bromide, and iodine receive 1 electron to become iodide. So you need to keep remember the difference between these. This is fluoride, this is chloride, this is bromide, and this is iodide. So you keep remember the difference between the names, right, बच्चों? सर ये Yes. इसकी नहीं से समझ आई सर इस पॉइंट की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया, मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक बात बताई है कि whenever you talk about group 7 members, अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे यानी अकेले होंगे, अकेले हमेशा वो अकेले जब होंगे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहलाएंगे। लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएंगे तो दे विल बी कंसीडर्ड एज हैलाइड आयंस, और फिर जैसे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड हो सकता है। इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सारे जो सॉल्ट्स होंगे इनके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके नेगेटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस, अभी मैंने इनको आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया है। सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखता हूं, which is very important to understand what is substitution. So you need to keep remember whenever highly reactive halogen. So you can see this, I am talking about molecule, highly reactive halogen, यानी कि highly reactive
आपके पास जब कोई मॉलिक्यूल होगा एलिमेंटल फॉर्म में, कोई आपके पास ग्रुप 7 होगा, when you pass it through the salt of less reactive, so it will displace this, right? So highly reactive halogen can displace the less reactive halide ion from the salt. This is what substitution reaction. Just look at over here. For suppose I have a salt of bromide, and what is the salt? This is NaBr. This is what the salt of bromide, right? Over here sodium is +1 and bromine is -1, so this is bromide ion over here. So for suppose I have this salt and I am passing chlorine gas from this salt, so you can see the statement that I write over here. If you have highly reactive halogen and you are passing this through lesser reactive halide ion or its salt, so you will see that कि ये जो highly reactive होगा ये less reactive को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा. So what you will observe कि bromine को हटा सोडियम के साथ आपके पास कंपाउंड Cl बना लेगा, और ब्रोमीन को जब ये निकालेगा एलिमेंटल फॉर्म में, तो वी नो दैट ब्रोमीन हमेशा डायटोमिक होता है, तो इट शुड बी Br2, राइट बच्चों? Yes. Yes. And for the balancing you can Yes, write sir. 2 over here. Got it, every one of you? And over here it is +1, it is -1, right? Yes, sir. Yes. Yes, And sir. keep remember the state symbols. It should be aqueous. This should be देखें दोबारा देखें, कोई मसला नहीं है. For suppose we have what? We have potassium iodide. This is what? This is the salt of halogen. You can say that this is halide ion over there. Potassium is from group number 1, so it is +1, and iodine is from group number 7, so it is -1. So when you are passing the more reactive halogen, अब iodine से ज्यादा reactive bromine भी हो सकता है, chlorine भी हो सकता है, fluorine भी हो सकता है. So I am passing chlorine from here. So when you pass highly reactive halogen from the salt of the less reactive, you will see this कि वो आपको क्या करेगा, वो जो less reactive वाला होगा उसको निकाल के highly reactive खुद लग जाएगा. और जब ये highly reactive ने less reactive को निकाला, तो हमारे पास एक ही iodine निकलेगा, लेकिन you need to keep remember कि iodine अकेला रह नहीं सकता. It should be I2. So that is why for the balancing we write 2 over here and 2 over here. Right, बच्चों? Okay, sir, got it. Any problem to any one of you? No, sir. जिससे इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. जी बेटे. सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उल्टा होता है ना कि कहते हैं लेस रिएक्टिव रिप्लेसेस हाईली रिएक्टिव. नहीं, वहां पर भी हाईली रिएक्टिव ही डिस्प्लेस कर रहा होता है लेस रिएक्टिव को. अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बात करें तो आपके पास सोडियम आयंस मौजूद है वहां पर फॉर सपोज, और हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, ठीक है ना? यही दो आयन मौजूद है ना. तो वो कहते हैं कि भाई लेस रिएक्टिव जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा. वो कहते हैं लेस रिएक्टिव जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा. इसका मतलब है लेस रिएक्टिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर कर हाइड्रोजन गैस बनाकर निकल जाएगा. ऐसे कहते हैं ना वो. और ये जो हाईली रिएक्टिव है इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन. सो सेम सिचुएशन ओवर हियर एज वेल. जो आपके पास लेस रिएक्टिव था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो प्रोडक्ट बनाकर निकल गया. सेम सिचुएशन. अंडरस्टूड. ठीक है भाई. ओके जी सर. सर अंडरस्टूड. अब देखें यहाँ पर आपके पास एक लास्ट इक्वेशन और मैं कर देता हूँ ब्रोमीन वाली. इफ यू टॉक अबाउट ब्रोमीन, so for suppose you are passing bromine from like you have calcium chloride salt, and for suppose you are passing bromine from magnesium iodide salt. So you can see this over here that bromine is less reactive and chlorine is more reactive, right? So when you have this type of reaction, there will be no reaction, right? Because less reactive cannot displace the more reactive one. But over here it can happen. Magnesium can displace iodine, and from salt with magnesium, bromine can displace iodine from the salt, and from salt with magnesium and iodine will be displaced like this. Right, every one of you? Yes. Yes. Yes, And sir. one more important thing that you should keep remember, these salts should be aqueous. ये काम aqueous में हो सकता है. This should be aqueous, right? And we know that bromine is liquid. You can consider this liquid or gas, whatever.
आप इसको सॉलिड कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो रूम टेम्परेचर पे जो स्टेट है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसको आप गैस कंसीडर कर सकते हो, इसको आप गैस कंसीडर कर सकते हो, इसको आप लिक्विड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है Okay. बच्चों। Yes, sir. एग्जाम में इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और इसकी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए वो आपको क्वेश्चंस देते हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो बोलेंगे बताएं कि हमने क्लोरीन पास आउट की, हमने क्लोरीन पास आउट की किस सॉल्ट में से, कि इसको पास किया तो ब्राउन गैस निकली। अब देखें, आप जरा देखें, ब्रोमीन का जो कलर है वो लिक्विड फॉर्म में रेडिश ब्राउन है और गैसियस फॉर्म में ब्राउन है। सो यू कैन कंसीडर इस, अगर आप इसको गैस सर कंसीडर ब्रोमीन करें तो आयोडीन। आप, ये ब्रोमीन है ना, ओके सर। बात कर रहा हूं। तो अगर आप इसको गैसियस फॉर्म में कंसीडर कर रहे हो, सो यू कैन से दैट ब्राउन गैस बबल। आप इसकी ये, आप ये जो है ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं अगर आप इसको लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, सो यू कैन से दैट रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन अपीयर्स। यू कैन कंसीडर दिस वन एज वेल, जो आपका दिल चाहे आप इसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। सेम एज इट इज ओवर हेयर, अगर आप आयोडीन को देखते हैं, अगर आप इसको सॉलिड कंसीडर करना चाहते हैं तो इसकी ऑब्जर्वेशन आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? यू कैन से दैट over here you can say that black solids appear, you can say that black solid appears, or you can say that effervescence of brown gas। ये भी लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, effervescence of brown या brown effervescence या of brown gas, right, whatever you need to say this। और ये भी लिख सकते हैं आप brown gas physics, आप ये भी लिख सकते हैं brown gas physics। फिजिक्स का लफ्ज यूज कर सकते हैं, ये आसान है। एफर्वेसेंस यूज कर सकते हैं, आप मर्जी आपकी, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है तो आप ब्लैक सॉलिड कहेंगे, अगर यहाँ गैस लिखा हुआ है तो आप ब्राउन कहेंगे गैस। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. ये बहुत आता है सवाल, वो आपसे कहेगा कि क्लोरीन गैस इज पास थ्रू व्हिच कंपाउंड, एंड एट द एंड ऑफ दिस कि यार वो ब्राउन सॉल्यूशन बना रहा है या वो ब्राउन गैस रिलीज कर रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि वहां पर जो भी ब्रोमीन का सॉल्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते होंगे। And after all of this discussion, the main thing, one more important thing that to be discussed is ionic equation. Ionic equation is also very important for this type of reactions. What is ionic equation? Let's see. इसकी ionic equation क्या होगी? Ionic equation. Just look at over here, बच्चों. If you talk about ionic equation, so in the ionic equation, we just need to remove the spectator ions, the ions that are present on both the sides, or the ion that are not showing any work in the equation. So just look at over here. The chlorine is initially neutral, and over here chlorine become ion. So there is a gain of electron by chlorine. And over here, just look at over here, bromine is ion over here, and now it become bromine neutral element. So it actually loses electron जो कि उसने पहले receive किया होगा। So आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम आयन स्पेक्टेटर आयन के तौर पर वर्क कर रहा है, मतलब ना तो पहले उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ना गेन किया, और ना बाद में उसने कुछ किया। तो सोडियम आयन ने यहाँ कुछ नहीं किया। So you can just remove the sodium ion from the equation, और ये बन जाएगी आपके पास ionic equation, right बच्चों? Yes, sir. And the same as it is for over here, अगर आप इसको लिखना चाहो तो it would be what? Chlorine is passing through the iodide salt, and you will see that chloride salt form and iodine releases. यहाँ पर पोटेशियम ने कोई काम नहीं किया। Same as it is over here, you can see this कि आपने ब्रोमीन गैस को पास आउट किया आयोडाइड सॉल्ट में से। यहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं कि I2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ I2 लिख दें। I2 ना लिखिएगा बच्चों, हमेशा हमेशा सॉल्ट में हेलोजेंस जो होते हैं ये -1 की फॉर्म में होंगे। Whenever you pass from them, you will see that कि ये ब्रोमाइड आयंस बनाएगा और आयोडीन को लिबरेट कर देगा। Is that right, every one of you? Any problem? Anything that you want to ask? No sir. All clear? जी सर, क्लियर। Yes, sir. Any one of you? बेटे किसी का भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जितने नए बच्चे हैं शायद आप मुझे ना पहचानते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डांटूंगा नहीं, कभी भी आपको आंसर दूंगा आपके सवाल का, चाहे वो कितना ही बचकाना क्यों ना हो। जी बेटे। कुछ नहीं सर। सर मैं पूछा था कि अगर क्या कहते हैं सॉल्ट में पहले ही एक हाईली रिएक्टिव हो जो रिएक्ट करे वो लेस होगा तो उसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं होगा ना?
जब हाईली रिएक्टिव उसमें ऑलरेडी मौजूद होगा तो उससे लेस रिएक्टिव अगर आप डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, या उसी को आप डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सही है? ठीक है सर। यस सर। चलें, अब मैं ये आपको करा ही रहा हूं तो देखें, मैं आपको एक चीज और इसके साथ साथ करा रहा हूं। दैट इज नॉट द पार्ट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन क्योंकि मैं हैलोजेंस की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैं उसको करा रहा हूं। हमारे सिलेबस में वो चीज है तो हमें वैसे भी वो करनी ही है, तो मैं उसको अभी करा रहा हूं। और वो क्या है? दिस इज द टेस्ट फॉर हैलाइड आइंस। वी हैव अ टेस्ट फॉर हैलाइड आइंस। हम हैलाइड आइंस को टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट हो और उस सॉल्ट के अंदर हैलाइड आइन है या नहीं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा हमेशा याद रखना है कि हैलाइड आइंस को चेक करने के लिए आपके पास मौजूद है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपने हमेशा याद रखना है कि आप क्या यूज करोगे बच्चों? सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट। हमारे सिलेबस में क्लोराइड आयन का टेस्ट है, हमारे सिलेबस में ब्रोमाइड आयन का टेस्ट है, और हमारे पास सिलेबस में आयोडाइड आयन का टेस्ट भी है। तो जब कभी भी कोई भी सॉल्ट ऐसा हो जो कि आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड रखता हो, आपने अगर उसको चेक करना हो कि कौन सा आयन रखता है, तो यू कैन ऐड सिल्वर नाइट्रेट ओवर देयर। बट सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से पहले आपको क्या ऐड करना होगा? एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड, HNO3 आप ऐड करेंगे, एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। गॉट इट बच्चों? क्या करेंगे जरा बता सकते हैं आप लोग मुझे जल्दी से? क्या करेंगे हम लोग? Add acidified Add- HNO3 and then add silver nitrate. Yes, first of all what we need to do, we need to acidify with HNO3 and then add silver nitrate तो याद रखो, जब कभी भी सिल्वर नाइट्रेट नजर आए फौरन से समझ जाना दिस इज द टेस्ट फॉर हैलाइड आइन। क्या करेंगे? एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड, हमेशा नाइट्रिक एसिड को डालेंगे ताकि कैटालाइज हो रिएक्शन, फास्ट हो रिएक्शन, एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। पूरे सिलेबस में जहां जहां सिल्वर नाइट्रेट नजर आएगा, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट टेस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, तो टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैलाइड आइन ही है। अदरवाइज आप किसी और चीज के टेस्ट के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज नहीं करते हो। सो रिमेंबर, अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए तो इट इज कंफर्म कि वहां क्लोराइड आइन है। अगर आपके पास क्रीम प्रेसिपिटेट्स आए, जिसको आप बोल सकते हो पेल येलो यानी कि लाइट येलो, अगर इस तरह के प्रेसिपिटेट्स आए, so you can confirm this कि भाई ये ब्रोमाइड सॉल्ट है। और अगर आपके पास डार्क येलो प्रेसिपिटेट्स आए, तो इट इज कंफर्म नाउ कि आपके पास इसमें, इस सॉल्ट में आयोडाइड मौजूद है। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? यस सर। Yes, क्लियर। sir. एंड ऑल्सो कीप रिमेंबर कि ये क्यों होता है। आपने सिल्वर आइंस डाले, ये आपने एक्वस फॉर्म में डाला, उसमें ऑलरेडी क्लोराइड आइंस मौजूद थे एक्वस फॉर्म में। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल वन, जिसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड ये बनेगा। वो इक्वेशन भी पूछ सकता है ये वाली 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपने सिल्वर आइन डाला, सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर, सो ये एक्वस है। पहले से उस सॉल्ट में ब्रोमाइड मौजूद था विच वाज एक्वस। जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास बना सिल्वर ब्रोमाइड विच इज इनसॉल्युबल सॉलिड, इसका कलर था पेल येलो। पहले से आपने इसके अंदर सिल्वर आइंस डाले हैं विच इज एक्वस, पहले से उसमें आयोडाइड आइन मौजूद था विच वाज एक्वस, और जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास बना सिल्वर आयोडाइड सॉलिड, जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट ये जो है पेपर 2 में भी आ जाता है, और थ्योरी में पेपर 4 में भी आता है, जीसीएससी में ये, और एमसीक्यू पेपर में भी आता है, ये दोनों बोर्ड्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल ही भी मैं कुछ बच्चों को आईजीसीएसई का पेपर करवा रहा था, तो मैंने उसके अंदर यही वाला पेपर 6 के अंदर मैंने जब ये कराया तो ये इंतहा का मौजूद था ये टेस्ट। ये तीनों टेस्ट बहुत मौजूद थे और इसके 3 मार्क्स दिए हुए थे टेस्ट के। तो आईजीसीएसई में ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और हमारे जीसीई के जो बच्चे हैं उनको ये याद रखना है बच्चों के, उनके लिए ये 2 मार्क के लिए आता है एटीपी में। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। और इक्वेशन अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए स्टेट सिंबल्स के साथ पूछेगा, और अगर स्टेट सिंबल्स के बगैर पूछेगा तो 1 मार्क की ये इक्वेशन कहलाएगी। ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
So let's see, we have one question over here with you. Can you solve this periodic table? Kahan chale gaye? Periodic table, periodic table, periodic table, periodic table. We don't have periodic table over here. So we need to download this. Give me a second, bacho. Let me download this.